Yes, sir. Hello everyone, my name is Sheikh Tabassum. I am from ABC CAD Centre, Pune. My designation is Junior Software Engineer. Today for webinar in Introduction to Python. Let's start now. आज हम जानेंगे Introduction to Python. Why Python? What can Python do? Features of Python, data flow diagram, important topics of Python, data types, control statement, OOPS concept, Python modules, etc. पाइथन आज के समय में पाइथन का यूज़ क्यों होता है, आज इंडस्ट्रियल में पाइथन का यूज़ कैसे किया जाता है, एप्लीकेशंस बनाने के लिए etc. ये सब जानेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर रन होने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग द्वारा बनाए गए हैं। आज के समय में आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे C++, जावा etc. ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो ह्यूमन के लिखे गए और समझे जाते हैं। हर लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे जैसे टेक्निकी दुनिया में बदलाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चेंजेस होते जा रहे हैं जो यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स अवेलेबल करते हैं। ऐसी एक लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन जो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में इंडेक्स में दुनिया के टोलोकेटेड प्रोग्रामिंग में से ऊपर का स्थान दिया गया है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज कितनी बेहतरीन हो सकती है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक ओपन सोर्स हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करना बेहद इजी है। साथ ही ये पावरफुल लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से बहुत फास्ट एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। पाइथन का यूज GUI, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। पाइथन लैंग्वेज C++ की तरह ही एक लैंग्वेज है, लेकिन ये बाकी के मुकाबले बहुत इजी लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स यूनिक है जो इस लैंग्वेज को यूजर्स के लिए इजी बनाता है। अलग अलग डेवलपर्स पाइथन के कोड को पढ़कर समझकर बहुत इजी है। पाइथन को पढ़कर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं जो दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत इजी है। पाइथन में डायनामिक टाइप सिस्टम, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के सुविधा होती है। AI और MI भी पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन पावरफुल लैंग्वेज होने की वजह से जिसका यूज बहुत बड़ी कंपनियों में होता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोरा, गूगल etc. पाइथन लैंग्वेज मॉड्यूल्स और पैकेज के सपोर्ट करती है। मींस इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन it is developed by Netherlands Video Van Lozum. Python developed by 1980. After 10 years के बाद पाइथन को लॉन्च किया गया है। 1991 जनवरी 1994 में पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 निकाला गया। इसका दूसरा वर्जन पाइथन 2.0 अक्टूबर 2000 में जारी किया गया है और इसका वर्जन पाइथन 3.0 एक लंबी अवधि के बाद दिसंबर 2008 में जारी किया गया। पाइथन का नया वर्जन 3.61 मार्च 2017 में रिलीज किया गया है। इस लैंग्वेज को इस तरह बनाया गया है कि इस पर लिखे गए कोड आसानी से पढ़ेंगे और समझे जा सकते हैं। पाइथन ही नाम क्यों रखा गया है, जबकि ये एक स्नेक प्रजाति के नाम के दरअसल पाइथन का नाम उपदित 1970 के दौरान पाइथन के नाम की उपदित एक कॉमेडी शो द्वारा की गई है। 1997 में BBC कॉमेडी सीरीज द्वारा मॉन्टी पाइथन फ्लाइट सर्कस स्क्रिप्ट हुई थी। इससे खुश होकर गुडियो वैन रोजम ने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स के कोड को रन करना के लिए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मल मेन बदला कर कंपाइल करने में पढ़ सकते हैं।
जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड करने से पहले सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड वर्जन करना होता है। इंटरप्रेटेड की मदद से पाइथन कोड सही कंप्यूटर पर आसानी से रन किया जा सकता है। पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो विंडो, मैक्स, लिनक्स जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर द्वारा यूज़ होने वाली लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन का यूज़ नासा में भी किया जाता है, जहाँ इक्विपमेंट और स्पेस मशीन बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इस लैंग्वेज का यूज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस मॉड्यूल्स में भी किया जाता है। पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है, जैसे HTML, XML, JSY, etc। पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिससे कोड रीड करना बेहद आसान है। इसका सोर्स कोड सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है और इसके कोड को रीयूज या मॉडिफाई करने के लिए सभी यूजर्स के लिए हमेशा ओपन रखा जाता है ताकि यूजर्स इसे इजीली डाउनलोड कर सके। यही एक वजह है पाइथन लैंग्वेज को ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। पाइथन एक ऐसी बहुत सी यूनिक फीचर्स है जो एक दूसरे लैंग्वेज से बहुत अलग बनाती है। Why Python? Python is a readability and simplicity. Python syntax is designed to be high readable, resembling English-like expression. Python को read और write करने के लिए easy है। Second है versatility and portability. Python is a versatile language that can be used for various purposes, including web development, scientific computing, data analysis, machine learning, automation, and more. Versatility के लिए यूज किया जाता है। Extensive library ecosystem. Python boasts a vast standard library, providing a wide range of modules and packages that simplify common programming tasks. Easy to learning and adoption. Python has a gentle learning curve, making it accessible to beginners without sacrificing its power and flexible. Productivity and repeated development. Python focus on simplicity and code expressive translates into increased productivity के लिए भी किया जाता है। Strong community and support के लिए Python का यूज किया जाता है। Python has a webnet and supportive community के integration and interoperability के लिए भी data science and machine learning में भी यूज किया जाता है। कम्युनिटी ड्राइव डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है और जॉब मार्केट एंड करियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए भी, डेटा स्क्रैपिंग एंड वेब क्राउडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। फीचर्स ऑफ पाइथन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. Python is called platform independent because a Python programming can be run on different kind of platform, for example, Windows, OS, Linux, etc. Object-oriented programming. Python supporting object-oriented programming structure, so it is called object-oriented programming language. Flexible. An application developed in Python can be modified as per user requirement, so it is called flexible programming language. Structure oriented. Python का structure एक ही रहेगा. To write a program in Python, there is a fixed structure, so it is called a structure
ओरिएंटेड, पाइथन का फिक्स स्ट्रक्चर रहेगा, उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड बोलते हैं। पोर्टेबल, अ पाइथन प्रोग्राम रिटन इन वन सिस्टम कैन बी रन इन एनी अदर सिस्टम, एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम में रन किया जाता है। सिंपल, अ पाइथन प्रोग्राम कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। Simple, Python is a very simple and easy to learn application of Python. Why use Python? It is a very simple and easy to learn. It powerful, fast and secure. It has very simple syntax. Python का syntax बहुत easy है, उसको यूज करना भी बहुत easy है। पावरफुल लैंग्वेज होने की वजह से आज के समय में पाइथन का यूज किया जाता है अदर इंडस्ट्रियल में, अदर कंपनीज में, या मोबाइल के एप्लीकेशन बनाने के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। It can be run on different kind of platform में भी किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल विंडो, मैक्स, लिनक्स, etc। पाइथन का फर्स्ट प्रोग्रामिंग है, सिंटैक्स है print hello python, it is very simple to write and execute any python program, python program can be executed directly is in a command line में। data flow diagram, डेटा फ्लो डायग्राम में इनपुट पाइथन स्क्रिप्ट आउटपुट भी बताया गया है। इनपुट पाथ द वीडियो फाइल फोल्डर के लिए किया जाता है स्ट्रिंग में, फिर पाथ टू आउटपुट फोल्डर, फिर पार्ट टू फोल्डर फॉर लॉग फिल नेम ऑफ फॉर लॉग फिल स्ट्रिंग, स्टार्ट इंडेक्स ऑप्शन के लिए भी किया जाता है। पाइथन स्टार्ट लोड इनपुट, फिर इंस्टॉलेशन डिपेंडेंस, गेट लिस्ट ऑफ वीडियोस, फिर वीडियोस में इज अनदर वीडियो इन लिस्ट ऑफ वीडियोस, ट्रू हो या फॉल्स बताने के लिए फिर आगे जाता है एक्सट्रैक्ट फीचर्स ऑफ फॉर नेक्स्ट वीडियो, फिर सक्सेसफुल होने के बाद सेव फीचर एज ए .csv इन आउटपुट फोल्डर में किया जाता है, फिर फीचर्स .csv में जाता है, फिर फॉल्स होने के बाद रिटर्न एरर बताता है, मैसेज फॉर लॉग फाइल बताता है, फिर सेव फीचर्स एज .csv इन आउटपुट फोल्डर में रिटर्न ट्रू टू लॉग फाइल में जाता है, फिर सेव लॉग फाइल .csv फिर स्टॉप हो जाता है। Important topic of Python. Following are important topics in Python there that are worth exploring. Variables and data types, control flow, functions, modules and package, file handling, data type, understanding how to declare variable and work with the different data types such as numbers, string, list, tuple, dictionary and set. डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल और डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। इसमें वेरिएबल से दी वाले नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एंड सेट। कंट्रोल फ्लो, लर्निंग अबाउट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स, कंडीशंस, लूप, फॉर एंड व्हाइल एंड द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। फंक्शन, understanding how to define and call function, pass arguments, return values, and work with local and global variables with the function. लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का यूज करके फंक्शन का प्रोग्राम्स रन किया जाता है, और कंट्रोल फ्लो में इफ एल्स आता है, कंडीशंस आते हैं, लूपिंग आती है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब यूज किया जाता है। मॉड्यूल्स एंड पैकेज का भी यूज किया जाता है। मॉड्यूल्स, एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड हाउ टू इनपुट एंड यूज देम इन पाइथन, इनपुट एक्सपोर्ट का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड into reusable package and leveraging external libraries के लिए भी किया जाता है। फाइल हैंडल करने के लिए एक फाइल क्रिएट करने का, इसमें जो भी अपन रन करेंगे वो बताने के वास्ते फाइल हैंडलिंग का यूज किया जाता है। Learning how to read from and write to files, manipulate files path and handle exception that may occur। फाइल हैंडलिंग में रीड राइट फाइल्स का यूज किया जाता है, जिससे अपने को पाथ का हैंडल किया और एक्सेप्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन ऑब्जेक्ट उप कंसेप्ट है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन,
encapsulation, polymorphism, etc. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है. Understanding the principle of OOPs in Python, including class, object, inheritance, polymorphism, and encapsulation. Error handling and exceptional handling. Learning how to handle errors and exception and occur during program execution. एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जो भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होगा, ट्राई, एक्सेप्ट, ब्लॉक, टू कैच एंड हैंडल स्पेसिफाई एक्सेप्शन के लिए यूज किया जाता है. वर्किंग विथ लाइब्रेरीज, एक्सप्लोरिंग पॉपुलर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इन पाइथन सच एज numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, tenfold, Django, Flash एंड मोर. वर्किंग विथ लाइब्रेरीज, ये पाइथन के लाइब्रेरीज है जिनका यूज किया जाता है वर्किंग विथ लाइब्रेरीज में. फाइल मैनिपुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग. Learning techniques for manipulating and processing data, including reading CSV files, JSON files, parsing XML and HTML, and performing data cleaning and transformation file. ETC यूज किया जाता है डिबगिंग एंड टेस्टिंग, कंसोलिंग एंड data types. Python provides several built-in data types are commonly used in programming. It is a type of data which is used in the program. There is no need of data types to declare a variable in type. There are many data types: numeric types, sequence type, mapping types, set types, boolean types, null type. Numbering. Numeric means numbering type. In integer represent whole numbers positive or negative without decimal. न्यूमरिक में 3 टाइप्स आते हैं: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर. इसमें इंटीजर रिप्रेजेंट होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल. फ्लोट में रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विच इंक्लूडिंग डेसिमल. कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड नंबर्स विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड. इंटीजर में 0 to 9 नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है. उसका सिंबल है %d. और नंबर्स पॉजिटिव और निगेटिव बताने के लिए इंटीजर का यूज किया जाता है. फ्लोटिंग पॉइंट में आता है 0.1. उसका सिंबल है %f. इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विच इंक्लूडिंग डेसिमल कॉम्प्लेक्स के लिए और रिप्रेजेंट नंबर्स विथ रियल और इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाय a+bi में किया जाता है. अब सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आती है, टपल आता है. स्ट्रिंग representing a sequence of character enclosed in single or double quotes. और लिस्ट में भी लिस्ट रिप्रेजेंट करने के वास्ते रिप्रेजेंट एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है लिस्ट को, और स्ट्रिंग को सिंगल और डबल कोट्स में किया जाता है. टपल. Tuple represent an order immutable collection of items enclosed in parentheses में किया जाता है. मैपिंग टाइप में डिक्शनरी आती है. representing a collection of key value pairs enclosing in curly brackets में किया जाता है. It allows fast access to value using unique keyword यूज किया जाता है. सेट में representing an unordered collection of unique element enclosed in curly bracket में किया जाता है. Poisson set में represent an immutable version of a set which means its elements cannot be modified. Booleans, true or false, represent the truth value true and false. It is often used for logical comparison and conditional statement. None type represent the absence of the value and null value in Python. It is often used in indicate the absence of return value or unionization variables.
कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 टाइप्स आते हैं, if else, if sliders, nested if. If the condition control statement are used in programming to control the flow of execution based on certain condition के लिए किया जाता है. Python provides several control statement that allows you to make decision iterated over code blocks, control the execution of the program. Here are the main control statement in Python. If statement. The if statement allow to you to execute a block of code if a specified condition is true. If the condition is true, its body executed, otherwise does not execute. अगर statement true होगी तो executed, does not executed. In the case of if in the place of condition always 0 and non-zero value is checked in, which 0 means condition false and non-zero means condition is true. If condition code blocks executed if condition is true. If else code blocks executed if previous condition is false and this condition true. Code blocks executed if all previous condition are false. For statement. The for statement is used to iterate over a sequence such as list, tuple, string, any iterable object. It executed a block of code specified numbers of times once for each item in the sequence examples. Code blocks executed for each item in the sequence में किया जाता है. For item in sequence में रखा जाता है. While statement. The while statement is used to repeated execute a block of code as long as certain condition is true. It allows you to create loops that continue until the condition becomes false, to run the body continuously until a required condition full. It is a to perform looping operation. When the condition will become false and execution of loop will be stopped. While break statement. The break statement is used to execute terminated looping permanently. It is typically used when a specified condition is met and you want to stop the loop immediately. Example, while condition, if some condition, फिर break statement use किया जाता है. Switch case में, other में continuous statement में the continuous statement used to skip the remaining statement in a loop iteration and move the next iteration में किया जाता है. It is often used when you want to skip certain iteration. Oops concept. Following are the main object-oriented programming concepts in Python presented in build points. Class and object, encapsulation, inheritance, polymorphism, method overriding, method overloading, abstraction, composition. ये उस कंसेप्ट हैं जो पाइथन में यूज किया जाता है. पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसलिए यूज किया जाता है. पाइथन के मॉड्यूल्स कौन कौन से? मॉड्यूल्स फाइल containing Python code that can be imported and used in other Python programs. They allow you to organize the reuse code, making it easier manage large project है. मॉड्यूल क्रिएट करना, क्रिएशन करना, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स करना, मॉड्यूल नेम स्पेस देना, मॉड्यूल्स यूजेज, importing specific items, importing with alias, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स के लिए यूज किया जाता है. थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के लिए क्रिएटिंग एंड यूजिंग कस्टम मॉड्यूल सर्च पाथ के लिए भी किया जाता है. थैंक यू.